So to the Zoom audience as well as everybody here, Ajahn Kevali has invited Venerable Anvajjo to do the Hindi chanting, evening chanting. So we'll have about 20 minutes of chanting, followed by some quiet time for about 30 minutes, and then a talk by Ajahn Kevali that will also be translated into Hindi. जो लोग Zoom पे जुड़े हैं सबका स्वागत है। आज शाम को अजान केवली ने वेनरेबल अनवज्जो को न्योता दिया है। वो जो हिंदी चैंटिंग है शाम की सायकालीन वंदना उसको लीड करेंगे। उसके बाद करीब आधा घंटा हम शांत बैठेंगे और फिर हम अजान केवली से धम्म देसना सुनेंगे जो कि हिंदी में भी अनुवादित होगी। तो अब अनवज्जो जी हमारे लिए सायकालीन वंदना लीड करेंगे। Yeah. Good evening. We chant evening chanting. Pandra, page Pandra. Ek Panch. 155. Page 15. 15. We chant one paragraph in Pali and then one paragraph in Hindi. Yo so bhagava arahang sama sambuddho Swakato yena bhagavata dhammo Supatipano yassa bhagavato sawaka sangho Tangmayhang bhagavantang sadhamang sasangang Ime isakare iyatarahang aropite hiabhipujayama Vejo he arahant bhagavan samyak sambuddhe Bhagavan ke dvara achitara samjaya gaya dhamma Dhamma ke margo achitara pratipadit karane vale Bhagavan ke shravaka sanghe Un Bhagavan Buddha Dhamma और संग की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं साधुनो भान्ते भगवा सुचिरा परिनिभूतोऽपि पाचिमा जनतानुकम्पमानसा इमे साकारे दुगतपन्नाकारभूते पाटिगानहतु Amhakang hitaya kaya Hamara saubhagya ki Bhagavan ko Mahanirvan ki prapti ke बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी आदरपूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करे
हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि अरहन्त भगवान् सम्यक् सम्बुद्धे भगवान् बुद्ध कामे अभिवादं कर्ताहु Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Bhagavan Kedvarachitara Samjaya Gaya Dhamma Usdhamako Me Naman Kartahu Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Bhagavan Keshravaka Sangha Jinhone Marko Achitara Pradipadit Kiyam Usanga Kome Naman Kartahu Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubabhaga Namakaram Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namaskar Unhe Johe Arahande Bhagavan Samyak Sambuddha Namaskar Unhe Johe Arahande Bhagavan Samyak Sambuddha Namaskar Unhe Johe Arahande Bhagavan Samyak Sambuddha Andamayang Buddha Nusatinayam Karomase Tang Ho Pana Bhagavantam Evangalayano Kiti Sado Abugato Iti Piso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Vijacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadam Sarati Sata Deva Manusana Buddho Bhagavati Bhagavan Buddha ki achi kirti is prakar peli hai ऐसे है भगवान अरहंत सम्यक समुदे ज्ञान और आचरण से संपन्न सुगत एवं लोक ज्ञाता बात के हुए मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध Andamayang Buddha Bhitutin Karomase Buddha Varahanta Varatari Guna Bhiyuto
Sudha vinyana karuna hisamagatato Bodhesiyo sujanatan kamalang wasuro Vandamahang tamaranam sirasajinedang Buddhoyo sabhapaninang saranametamutaman Patamanusatitanam Vandamitam sirenaham Bhagavan Buddha Jo Shresht Arahant Hai Uttam Guno Se Yukta Hai Shuddha Ati Uttam Pragya Evang Karuna Ke Punche जो समझदार मनुष्यों की बुद्धि जगाते हैं जैसे सूर्य कमल को खिला देता है उन अहिंसक जिनका मैं सिर झुका कर वंदन करता हूँ भगवान बुद्धा जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित चारण है मैं पाली अनुस्मृति के रूप में उनका सिर झुका कर वंदन करता हूँ Buddha samida soa Buddho me samikisaro Buddho dvakasagata chavidata chahitasame Buddha sahang niyademi sarirang jivitang chidang Vandantoham charisami Buddha seva subodhitan मैं भगवान बुद्ध का दास हूँ और बुद्ध मेरे शास्त्र हुए मैं भगवान बुद्ध को यह शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ मैं श्रद्धा पूर्वक भगवान द्वारा बताए गए बोधि के मार्ग पर चलूंगा नाति में सारानां अन्यां बुद्धो में सारानां वरां एतेन सच्चवाजेन वारेयां सातु सासने बुद्धं मे वन्दमानेन yang punyang pasudamida sabe piyantaraya me mahesung tasate jasa मेरी कोई और शरण नहीं है भगवान बुद्ध ही मेरी श्रेष्ठ शरण है इस सत्य वचन के प्रभाव से शास्त्र की शिक्षा में मेरी प्रगति हो भगवान बुद्ध की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो
Yeah, next one I do. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagavata dhammo sanditiko hakaliko ehipasiko opanaiko pachatang vedita bovin yuhiti Jo Dhamma Bhagavane Achitara Samjaya Yai Spashdiktahe Karatite Anvishna Ko Protsahit Karta Hai Andarmukhi Karta Hai Pratyek Pragyavan Ko Vyaktigat Roop Se अनुभव होता है Handamayang dhamma bituting karomase Swakata tadiguna yoga vase naseyo Yo magapa kapariyati vimoka bedo Namo kulo kapatana taradhari dari Wanda mahang tamaharang waradama metang Namo yo sabapaninang saranang hemang uttamang Dutyanusatitanang Andamitang sirenaham Bali prakar se samjaya gaya ye Dhamma sarva shreshthe जिसके मार्ग और पाल परियाति और मोक्ष दो आयाम है जो धम्मा को शरण करते हैं उन्हें नीचे लोकों में गिरने से भाग जाते हैं अंधकार उतारने वाले इस श्रेष्ठ धम्म की मैं वंदना करता हूँ धम्म जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित चारण है दूसरी अनुस्मृति के रूप में सिर झुकाकर मैं उसका वंदन करता हूँ Dhammasahamidāsova Dhammo me samikisaro Dhammo dukkha sagata chavidata chahitasame Dhammasahang niyademi sarirang jivitan shidang Vandando charisami Dhammase vasudhammatam Me Dhamma ka das hu Dhamma mera shresht svami hai Dhamma ko me apna sharir aur जीवन समर्पित करता हूँ और धम्म की वंदना करते हुए मैं धम्म के श्रेष्ठ मार्ग पर चलूँगा नाति में सारानां अन्यां धम्मो में सारानां वरं एतेन सच्च भाजेन वादेयं सातु सासने Dhammang me vandamanena Yam punyang pasutam idha Sabe piyantaraya me Mahesum tasa jejasa
Meri koi o sharan nahi hai, Dhamma hi meri sarvashresh charan hai, इस सत्य वाचन के प्रभाव से शास्त्र की शिक्षा में मेरी प्रगति हो। धम्म की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। कायेन वाचाय वाचेतसा वा धम्मेकुकमं भक्तं मयायं धम्मोपतिगणातु अचयन्तं कालं तरेसं वरितुं वदामि मन वचन और कर्म से जो भी मैंने धम्म के प्रति दुष्कृत्य किए, धम्म उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। Handamayan sanganusatinayan karomase supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho Samichi patipano bhagavato sawaka sangho Yatidam chatari puri sayugani atta puri tapugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anutarang punya ketang lokasati Dhamma ke marko achitara pratipadit karane vale Bhagavan ke shravaka sang Dhamma ke marko siddhe pratipadit karane vale Bhagavan ke shravaka sang Dhamma ke marko gyana purvak pratipadit karane vale Bhagavan ke shravaka sang Dhamma ke marko nishta purvak pratipadit karane vale Bhagavan ke shravaka sang जो है चार युगाल और आठ प्रकार के आर्य ये है भगवान के श्रावक संग वे है भिन्न देने योग्य आतिथ्य के योग्य दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य इस लोक में अतुल्य पुण्य क्षेत्र Handamayang sangabituting karomase Sadhamajo supati pati gunadi uto Yota bido arya pugala sangha seto Sila di dhamma vavara kutaya kaya cito Wanda mahang tamariya nagana susudhang Sanggayo sabapaninang saranang hemang utamang Tatiyanu sati tanang vandamitang
सिरेनाहम साधारण से उत्पन्न सद्गुण से युक्ता संग इस मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करता है जो आर्यों का श्रेष्ठ संग है जिनकी काया और चित्त शील आदि धर्म से युक्त है उस शुद्ध आर्य संग का मैं वंदन करता हूँ जो संगा सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित चारण है तीसरी अनुमति के रूप में मैं उस संग को सिर झुका कर वंदन करता हूँ Sangha sahasamidaso wa Sangho me samikisaro Sangho dukkha sagata chavidata chahitasame Sangha sahang niyademi Sarirang jivitang chidang Vandantohang charisami Sangha patipanatang Me Sangha का दास हूँ और संग मेरे श्रेष्ठ स्वामी है मैं संग को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और संग की वंदना हुए उनके द्वारा अच्छी तरह प्रतिपादित मार्ग पर चलूंगा नाति में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च भाजेन वादेयं सातु शासने संगमे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा साबेऽपि अन्तराया मे माहेषु तेजसा मेरी कोई और शरण नहीं है संग ही मेरी श्रेष्ठ शरण है मेरे इस सत्य वाचन के प्रभाव से मैं शास्त्र की शिक्षा में आगे बढ़ा संग की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो कायेन वाचा वाचेतसा वा संगे कुकमान pakatan mayayan Sanggo patigan hatu acayantan Kalang tare sang waritung wasange मान वाचन और कर्म से जो भी मैंने संग के प्रति दुष्कृत्य किए संग उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे जिसे मैं प्रवास्य में संयमित रहूं So you can sit for about 20 minutes, and at 7:50 we have a bell. Then hear some Dhamma from Ajahn Kevali that will also be translated. अब हम अगले 20 मिनट शांत बैठेंगे 7:50 पर एक बेल होगी और फिर हम अजान केवली से धर्म देशना सुनेंगे जिसका हम हिंदी में भी अनुवादन करेंगे
Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Dhammang Sanghang Namasami Ito parang sakacang dhammo sotapoti. I ask permission from the Sangha to give a few reflections tonight, and wish all of the gathered lay people and the people on Zoom a good reflection on Dhamma while I'm talking, so that you can make use of the offerings of thoughts and the understanding that we may already share, may bring some new aspects together with the situation that we're in today. And in the beginning, I would like to say I'm very happy to be here, of course, in Sangarama, in Adibadri, in Yamuna Naga, in Haryana, in India. Yeah, so this is very nice for the whole group of us coming from Thailand to experience a change of setting. Because if you're always in the same place, then it just feels like a bit maybe boring. You try to search for new excitement, and actually, we cannot always find new excitement. We already have enough going on, actually, but we make our life difficult for not being content and happy with what we have. तो सबसे पहले जैसे कि प्रथा है, आचार्य केवली ने जो उपस्थित संघ हैं और सब लोग हैं उनसे अनुमति मांगी कि वो धर्म पे हमसे कुछ बातें शेयर कर सकें, और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम अगले कुछ मिनट जो सुने वो इस भाव से सुने कि जो भी उनके शब्द हमारे कानों में पड़ रहे हैं उससे हम और इन वर्तमान परिस्थितियों से हम जितना हो सके जो धर्म का सार है वो ग्रहण कर सकें। तो ये तो उन्होंने हमसे हमारा एटीट्यूड, रवैया बनाने के लिए कहा। फिर उन्होंने शुरू किया ये बात शेयर करते हुए कि कितने जो थाईलैंड से सारे मित्र आए हैं, ग्रुप आया है, एक तरीके से उनके लिए एक काफ़ी बदलाव है कि परिवेश पूरी तरीके से अलग हो गया है, बदल गया है। और अक्सर जब परिचित परिस्थिति में हम रहते हैं तो अक्सर मन जो है एक तरीके से बोर हो जाता है, बहुत ही चीज़ें पुरानी सी बासी सी लगने लगती हैं। और तो इस संदर्भ में जो थाईलैंड से सब लोग आए हैं उनको सबको, आचार्य केवली को प्रसन्नता होती है एक अलग परिवेश में आने में। We sometimes overlook the things that are special because we're used to them already. For example, to be able to meditate and to be able to come together in the Dhamma, if we do this regularly, we might take it for granted. And we might get somehow bored with our meditation, and the mind wanders off to other places, and we get, say, all kinds of ideas what would be more exciting. And that's a trap we fall into easily. Also, becoming a monk sometimes, after some time, it all feels so normal that we don't have the same feeling of inspiration as when we first met the monkhood. Or for yourselves, like first coming to Sangarama may be very inspiring, very exciting, and then being here for quite a while already, then everything becomes normal, it becomes a routine. So what do we do then? Well, in one way, ultimately, we just use our mind to see what is happening. For example, if we get somehow distracted and feel not seeing the value of things anymore, we go deeper and we go into the meaning of things and try to recollect with our strength of mind the things that are actually happening. And just the mere act of looking at them more thoroughly
brings up feelings of profundity and brings up a feeling of being immersed in a very deep situation. Even though we have known it before, we've seen it before, sometimes we just need a reminder for ourselves to say, look into this and apply your own heart. Make sure that you feel connected with what's happening rather than just being in a superficial worldly mode. तो अजान केवली जो हमें संबोधित कर रहे हैं उसका मूल जो थीम है एक तरीके से वो जो मन हमारा ऊब जाता है किसी चीज़ से, एक परिस्थिति जिससे कि हम परिचित हैं, बार बार उस परिस्थिति में जब रहते हैं तो ये संभावना बनती है। आचार्य जी बता रहे हैं ये मन जिसको हम अंग्रेजी में बोर्डम कहते हैं या हिंदी में हम कहें कि भाई बासी हो गई कई चीज़ों से हम ऊब गए हैं, इस मुद्दे पे अजान हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे हम यहाँ संग्राम में शुरू में आते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन होता है, बहुत इंस्पिरेशन होता है, और फिर धीरे धीरे बार बार अगर आते 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 फिर चीज़ें सामान्य सी लगने लगती हैं। ऐसे ही वो भिक्षु जीवन के बारे में बताते हैं कि भाई शुरू में बहुत इंस्पिरेशन होता है लेकिन धीरे धीरे बहुत चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में हम क्या करें, और वो हमें एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम कुछ जो हमारा परिवेश है, परिस्थितियां हैं, अगर उनको हम केवल सतह से जानेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार का भाव आ सकता है। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें, गंभीरता से देखें, नज़दीक से देखें और केवल सतह पे ना रह के थोड़ा उसमें गहरे जाएं, तो संभावना है कि उसी परिस्थिति की, उसी परिवेश की जो अन्य उसके स्वभाव हैं वो सामने आने लगेंगे। तो वो संक्षिप्त में हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम केवल सतह पे, किसी भी चीज़ की सतह पे ना रहें बल्कि उसको गंभीरता से, गहराई से जांचने की कोशिश करें। Yes, I would say in meditation, this is one of the biggest hindrances, that we fall into that mode of repetitiveness and are doing things superficially than really valuing what is happening. And what is happening is usually nothing very special. For example, we were just sitting silently, maybe watching the breath, and it's not very difficult or it's not very exciting in itself. And it's also very broad, a very broad experience where we can fill out the experience with a special dedication. But usually, like the breath or just sitting or so, is actually quite boring. It's actually nothing happening, which is of course the idea, to have nothing happening. But then we try to adapt our way of thinking in order to get more excitement out of the very ordinary things. And this is then building up the contrast to being either very excited or very bored, or being very normal and finding things are just happening without really realizing what's going on. And the other part is being very excited and being very inspired or being very dedicated. For example, in meditation, many times when things get boring or so, then we are used to watching the breath. The mind wanders off and looks for something more exciting. Yet the idea of having the peace of mind while looking at the breath as the most exciting thing also sometimes happens. Maybe when we are shocked by things outside, and there's something very dramatic happening, like a near car accident, for example, or that we are losing somebody who is very dear to us, or we are in a very tragic situation, and externally everything is so exciting and so arousing of like energy in a sense that really upsets us, that we actually really find it so special to be able to go to the mode of peace and mode of simply breathing and having a sense of valuing the very, very experience in a moment of tragedy, in a moment of drama,
it sometimes feels really profound just to go inside and be quiet. And actually, it's the same breath that we have, like it's like whether we're just in this normal mode right now, where we just kind of meditate because we're used to it and because it's a good thing to do, or whether we're in a dramatic setting where we really say, now this is important, now we have to go in depth, now we have to really breathe, and now we have to really enjoy the peace, now we have to really make use of the energy inside ourselves. तो अब मुद्दे को, इस थीम को अजान ने आगे बढ़ाया। उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई सामान्य रूप से जब हम जो भी हमारी सामान्य पारंपरिक साधनाएं हैं जब हम करते हैं, खास करके सांस से संबंधित या बैठे हुई अवस्था में, तो ये बहुत सामान्य है कि इस प्रकार का बासीपन, इस प्रकार का बोर्डम आ जाए, क्योंकि कुछ खास तो हो नहीं रहा, केवल सामान्य रूप से सांस चल रही है, हम बैठे हुए हैं। तो ऐसा बहुत आसानी से हम इस जाल में फंस जाते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हम ध्यान इस बात की तरफ दें कि जब हम जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में किसी बहुत उत्तेजनात्मक चीज में फंसे हुए हैं, या जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बहुत मन को विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, या उसमें बहुत एनर्जी, वीर्य जगा रही हैं, उस परिस्थिति में हमें पता चलता है, समझ आती है मूल वैल्यू इस प्रकार की शांति का, इस प्रकार के सामान्य जो साधना है उससे जो शांति मिलती है, जिसको अगर हम ध्यान नहीं दें तो आसानी से वो बोर्डम में, वासीपन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हमें इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ऐसे ढर्रे पे ना फंसने के लिए हम ध्यान अपना ऐसी चीज़ों पे लगाएं, जीवन में ऐसी परिस्थितियों पे लगाएं जो अगर हो चुकी हैं या होती हैं हमारे साथ या अन्य लोगों के साथ हो रही हैं, जिसमें अत्यधिक मन में विचलन है, और उससे हम तुलना करें तो हमें जो सामान्य हमारी साधना है उसकी जो सुकून है, उसकी जो शांति है, उसकी जो वैल्यू है, मूल है, वो समझ आने लगेगा। So these very dramatic situations where I can remember a few in my own life where I was really so glad to have a little meditation niche or meditation corner, or a part of my life that's used to meditating, where I felt outside everything is so chaotic. I'm so glad I can go back to the breath. And of course, like on a daily life, when I was just kind of doing my own regular routine, I also have the opportunity, but there's nothing pressing me, so I didn't feel the need to apply myself so deeply to that as when there is an external thing that triggers the urge and the need to go inside. I believe this will always be the case in one way or the other, and at some point, maybe at the end of our life or in terms of crisis, we'll be actually really using that energy for going inside when things outside aren't very conducive anymore. I hope so, that we have built up this access, this little corner, this little niche where we can revert to when things are dramatic outside. वो बताते हैं कि उनके खुद के जीवन में उन्हें कई बार कई ऐसे प्रसंग याद हैं जब जीवन में बहुत उत्तेजनात्मक चीज़ें हो रही थी, बहुत, जिसको वो ड्रामेटिक कह रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ हो रही थी जिससे मन विचलित हो, और तब उनको ये याद आता था, जो भी थोड़ी बहुत क्षमता मन की बनी थी अपने खुद के अंदर जाने की, अपने आप में अपने आप में सुकून और शांति का एक जगह पाने की, उसका मूल उनको तब याद आता था, या तब वो उसको वैल्यू करते थे। तो हमें वो ये बता रहे हैं कि भाई हम भी इस तरीके से जीवन में सामान्य रूप से इस प्रकार की उत्तेजनात्मक परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं, और जो मूल रूप से हम सबके जीवन में आने ही वाला है, जब हम मृत्यु के करीब हैं, तब जिस प्रकार की मन की स्थिति होने की संभावना है, यदि हम अब से अपने आप को, अपने मन को एक स्थिरता की स्थिति, एक सुकून की स्थिति की आदत डालने लगे, तब
चाहे जो सामान्य उत्तेजनात्मक परिस्थितियां हैं या जो अंत में परिस्थिति मृत्यु के करीब आने वाली है, उसमें हमारे पास ये एक जगह हमारे मन में बन जाएगी जिसमें कि हम एक सुरक्षा महसूस कर सकें, एक शांति महसूस कर सकें, एक सुकून महसूस कर सकें, इस बात से परे कि परिस्थितियां आसपास की हमारी कैसी। And to be able to come to this deepening and this very, say, exciting feeling of now I need to go to refuge, I think it's also the fruit of our preparations for that. When we do our normal practices where nothing dramatic is happening, nothing special is happening, and we're still trying to incline our minds to the breath, incline our minds to the practice of mindfulness, incline our minds to see the value in the Buddha's teachings or in the Lord Buddha himself. We just try to bring this up as on a regular basis and do it whether there is something special going on or whether there is nothing special going on. And I believe this builds up the gateway to be able to do this in times of need. तो अब यदि हमें इस प्रकार के एक सुरक्षित शरण का फल चाहिए तो उसके लिए हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब किसी जादू से ऐसी शरण, ऐसी सुरक्षा मन को मिल जाएगी, बल्कि जब जीवन में कुछ बहुत खास नहीं भी हो रहा है, सामान्य जीवन चल रहा है, तभी भी यदि इस प्रकार की सुरक्षा को हम भावित करते हैं, भावित करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, तब ये संभावना बनती है, आचार्य जी बता रहे हैं, कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति, विषम परिस्थिति, उत्तेजनात्मक परिस्थिति प्रकट होती है तो मन में वो क्षमता, शक्ति रहेगी कि वो अपने आप के अंदर जो एक शरण है, सेफ्टी की शरण है, उसमें वो जा सके। And also in a positive sense, if we have a feeling of this is a special opportunity, for example, coming from Thailand to India and having a very clear sense of this is the land of the Buddha, this is the land where the Lord Buddha walked through, for example, in Uttara Kuru, in the northern parts of the Kuru country. The Buddha was walking through and teaching and stopped over, maybe even in this very place here in Sangharama in Adibadri. Who knows? And it's been accounted for in the accounts of the Chinese pilgrims, but yeah, just a reflection that is this possible anywhere in all of India that the Buddha was walking around with Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana, Venerable Ananda, and maybe many, many others, like, for example, his son Rahula, for example. So it could be very, very special for all of you to live in India with the idea, this is the Buddha's country, this is where the Buddha walked, and this is where the Buddha taught. And I believe it is. Yet it may also be kind of something that you got used to already. Whereas for us coming from Thailand, it's very special. And we feel very excited about it. Like today, going to the old monastery up on the Som River in Adibadri, in the old site, and also being here just next door, and then going to Yamunanagar to Chaneti Stupa. And for somebody who's come just from a very different setting, this may seem very, very inspiring, very special. And I believe, I was thinking, is my feeling of, say, loving India because of the Buddha, is that the same for somebody who's born in India? So because, like, you're born next door, so to say. Maybe you're so familiar with your neighbor already that it doesn't always bring up the same joy and rapture and faith. I believe no, it does, of course, because I know you also have like very, very different settings in your life. Sometimes you have to work in worldly situations. Sometimes you have to cope with stress. Sometimes you are maybe enjoying family life and all kinds of pleasant things in your culture. And then
this builds up the idea of now when I dedicate myself specifically to the Buddha's teachings, to the Buddha's practice, I can feel a connection because like I'm already next door. I'm already in there. It may also be just the same for you, for us coming from Thailand and for you coming from a normal daily life into this situation where we give special importance. So the special importance is the thing that we try to cultivate when we practice, not just the average mind of like, okay, this is going on, this is going to happen, this is going to pass, and in no time the event here will over, and we don't really know what happened, but it was all very, very exciting and very engaging. But we kind of slithered through it without really realizing how important this is. And I believe the Buddha's practice of being mindful and being aware of what's going on is exactly this, like in times of crisis or in times of happiness, to go back to the importance of these situations and take the externals and to the inside and make them somehow rich and inspiring, whether they're good or bad things that are happening in our life. तो आगे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अजान ने हमारे सामने रखा है कि भाई कैसे ऐसा किया जाए कि सामान्य परिस्थिति में भी हम कुछ खास ढूंढ पाए, देख पाए। तो हमें उदाहरण देते हैं कि भाई वो तो थाईलैंड से आए, हमारे सारे अन्य मित्र थाईलैंड से आए, उनको बहुत प्रोत्साहन होता है, बहुत उनको अच्छा लगता है कि वो ऐसी जगह पे हैं, ऐसी पावन धरती पे हैं जहाँ संभवतः भगवान बुद्ध के खुद के कदम पड़े थे, उनके प्रमुख शिष्यों के कदम पड़े थे। ये प्रसंग तो सुत्तों में भी आते हैं कि ये जो कुरु का प्रदेश है, कुरुक्षेत्र है, उत्तर कुरु है, इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख सुत्त भगवान ने पढ़ाए। तो अजान कह रहे हैं भाई बहुत संभावना है कि जहाँ हम आज बैठे हैं या जो पुराना विहार है, प्राचीन विहार है, वहाँ भगवान बुद्ध के कदम पड़े हों। तो जब हम थाईलैंड से आते हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, और जब हम इस बात को सोचते हैं तो मन में बहुत प्रमोद, प्रीति जागती है। और ये संभावना है कि जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो लोग इधर रहते हैं, उनके लिए सामान्य बात है, ऐसी क्या खास बात है, यहाँ पे तो रोज का एक सामान्य जीवन चल रहा है। तो कैसे किसी सामान्य परिस्थिति में, किसी सामान्य बात में हम कुछ विशेष देख पाए, और उसमें वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम ध्यान से, हमारा ध्यान हम किस बात पे लगा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि हम मन को ऐसे ही ढर्रे पे चलने देते हैं या मन को हम मन में हम एक प्रकार का जिस बात पे हमें ध्यान देना है वो वीर्य हम जगा पाते हैं। तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ पे जो जिन लोगों के लिए ये धरती नॉर्मल है, कुछ बहुत विशेष नहीं है, अगर हम इस बात की अनुस्मृति करें, इस बात को याद करें कि अच्छा संभवतः यहाँ भगवान बुद्ध चले होंगे, तो हमारे मन में भी उस तरह का एक भाव जाग सकता है। तो ये तो उदाहरण था, वो हमारा ध्यान इस बात पे आकर्षित कर रहे हैं कि ये एक्चुअली हमारे एक तरीके से कुछ हद तक हमारे वश में है कि हम मन को केवल ऐसे ढर्रे पे ना चलने दें, बल्कि जो चीज मन को प्रमोदित करती है, उत्साहित करती है, उस तरफ उसका ध्यान ले जाए। So I believe in the practices that the Buddha taught. There are many things that are very ordinary as well, but there are also very many things that are really aroused by a sense of urgency. For example, when we think of the simile of the four great mountains encroaching from the north, east, south, and west, and there's nothing to do but practice the Dhamma and do wholesome deeds, because you'll be crushed by these massive natural forces, to say it simply, very dramatic and very, very urgent, like one of those wake-up experiences when the king hears, like the Buddha saying, look, these great mountains are going to crush you. He gets a sense of arousing of energy because of the urgency and seeing dukkha is approaching. There's no escape. We have to go inside. We have to practice the Dhamma and do wholesome things.
Then there's also the very positive things that the Buddha talks about, very exciting. For example, we hear of stories when the Savakas and Savikas attain enlightenment simply out of the joy of hearing the Dhamma. Maybe it's not just the joy, but the profundity of hearing the Dhamma, something very positive. They meet the Buddha, for example, on the road, when Bahia meets the Buddha on the road and asks for a teaching. And then through the preciseness of the teaching and the readiness of the moment, and I believe through the faith and the positive energy that arises from this special situation, Venerable Bahia becomes one of the arahants, for example. So there's this very exciting positive and negative experiences in the accounts of how people practice. And there's also the very ordinary things that the Buddha recommends, like, for example, anapanasati, very ordinary, just watching the breath. Don't fall over, don't fall asleep, don't let your mind wander, just go back to the breath, long or short, never mind, just go back to the breath, just breathe. And I was, before I became a monk, I used to use this counting technique, and it's very unexciting. You count from 1 to 10. And if you're at 11, you know you haven't been mindful. So you go back to 1. So just like repetitively doing the same exercise, trying to see something very, very special and deep in a very, very ordinary technique. So that's not even like using the word Buddho, which we now do which I now do at the in the Thai forest tradition. You still have the feeling, wow, this is the Buddha's name. You know, this is like the name of the enlightened one, Buddha, Buddho. And you do it breathing in, breathing out. You have the specialness of the mantra, so to say. It's got some flavor to it, and that is quite something. But it can also get automatic. You can go Buddho, Buddho while you're driving your car, while you're peeling some oranges, or while you're basically walking up and down on your Jongkrom, on your walking meditation path. You go Buddho, Buddho, and you don't know where you are anymore, because the very exciting and the very, I say, profound somehow becomes worn out, becomes trivial, and becomes daily life and nothing special. And we're back to, like ordinary worldly awareness, even though actually, this is something special that we're doing. And I believe you have just passed, or some of you maybe have just passed, like the teaching of the Satipatthana Sutta with Dr. Dar giving reflections and instructions on that. And there's so much very ordinary things in the Mahasatipatthana Sutta, as well as very profound, very deep things. And we have the whole spectrum of the practices of the Dhamma, hinging on a daily life, normal practice where we have to make the unexciting exciting by our application of effort, by the mindfulness and by the thoroughness of our practice. And then we have the very, very urgent situation, for example, meeting a special teacher. We have Lumpur Liam coming today. Everybody is very motivated and happy, shiny, happy faces and open hearts. Or we have maybe something very dramatic happening, for example, situations of grief, loss, and drama, tragedy, which we call dukkha, basically. And we turn inwards to make something profound and deep and nourishing out of these experiences, rather than just letting them pass without any sense of what's the importance of these things. तो आगे आचार्य जी हमें बताते हैं कि भाई भगवान बुद्ध की शिक्षा में कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के प्रसंग आते हैं अपने मन को मन में वीर्य जगाने की तरफ। प्रथम, जिसमें कि एक प्रकार से हम मन में भय के माध्यम से, या भय तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन खतरा जो हम देखते हैं किसी चीज में, उस माध्यम से भगवान हमें सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे जो 4 चट्टानों वाला प्रसंग आता है, जिसमें 4 चट्टानें आपकी तरफ आ रही हैं, चारों दिशाओं से चट्टानें आ रही हैं राधस, और उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं भाई इससे तो कोई भी नहीं बच सकता। ये सभी के जीवन में इस तरीके से चारों दिशाओं से जो मृत्यु है
वो आ रही है। तो ये एक तरीका है, और सुत्तों में कई जगहों पे आता है, जिसमें जो जीवन में निहित खतरा है उसके माध्यम से मन में वीर्य जगाने की कोशिश होती है, या हम वीर्य जगा सकते हैं। दूसरा उदाहरण अजान केवली देते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे जो बाह्य सुत्त है, उसमें जिस तरीके से बाह्या को अ, भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध से जब उनकी मुलाकात होती है, बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी वो धर्म समझ जाते हैं और तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि अलग प्रकार का प्रसंग है कि कैसे इंस्पिरेशन से और एक तरीके से मन में प्रमोद के माध्यम से या मन में वीर्य के माध्यम से जल्दी से मन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार के भी प्रसंग आते हैं, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार की अनुसतियों को। और तीसरा बहुत सामान्य जो सूत्र हैं, जो सामान्य टीचिंग्स हैं सांस के संबंधित, या जैसे जान बता रहे थे कि अभी में से कई लोग सती पठान की रिट्रीट जो धर साहब दे रहे थे उससे निकल के आ रहे हैं। सती पठान सूत्र में कई सारे बहुत सामान्य प्रैक्टिसेस और बातें की गई हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम मन को ऐसे ही बस ढीला छोड़ देते हैं, फैल जाने देते हैं, ढर्रे पे चलने देते हैं, या जो बहुत सामान्य चीज़ें हैं उनमें भी हम रचनात्मकता से, क्रिएटिविटी से अपने मन में वीर्य और एक तरीके की जो अर्जेंसी है वो जगाने की कोशिश करते हैं, या अर्जेंसी हम जगा पाते हैं। So we have the duty to give things deep importance and see them very, let's say, profoundly, or see them with an inner dimension of that. The act of seeing these things and realizing what's going on gives us a sense of purpose, a sense of like understanding. And it all hinges on how much we give importance to things. It can be something very trivial, for example, washing the dishes, even in the Satipatthana Sutta, as you know, even going to the toilet, like Luang Por Liam was talking about in the introductory talk when he arrived. He talked about the urge of the body to rush to the toilet already being dukkha. For example, we can see these things in very, very simple teachings. But we need to realize that all these are factors of life, and we need to be able to apply our mind without getting bored or averse or annoyed by things or getting tired of them, but giving them importance as they arise, as they come, and not only waiting for the special situations, but taking that special energy that we sometimes get back to the ordinary, to find importance even in the small things and even in the external things that otherwise we might get bored of, or like that we might dismiss as normal or as already understood, so to say. For example, the change of the seasons, the change of our moods according to that, something that we can always contemplate, or the environment that we live in, whether it's loud or whether it's quiet, whether there are people or whether it's solitary. It always hinges on us realizing what's going on and seeing this with due importance, looking into it and really experiencing it, not just superficially taking it for granted and then ticking things off and one after the other. And then we end, for example, like I said, in our counting meditation, we end up wanting to count to 10, but we actually end up counting to 25 instead, having lost the plot because we weren't there. We weren't with our task. We weren't seeing each breath as it is and not having that simple algorithm or simple program realized, but we just let it run wild. तो अजान दोबारा से जो इस देशना का जो थीम है, जो इसमें कड़ी चल रही है, उस पर वापस आ रहे हैं कि घूम फिर के बात इस पे आती है कि हम ध्यान जो है या किसी भी परिस्थिति को हम किस गंभीरता से देखते हैं, जांचते हैं। हम चीज़ों को सतह पे देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से देख के छोड़ दे सकते हैं और ऐसे जीवन निकल जाएगा,
या सामान्य गतिविधियों में भी। फिर वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सुत में भी, या जैसे आज सुबह लियम में बात की थी कि भाई शरीर का ये स्वभाव है कि उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, और फिर जो चीजें शरीर में गई हैं उनको फिर निकालने का भी समय आ जाता है। तो शरीर कभी आराम से, सुकून में, चैन से, शांति से कभी भी नहीं होता है। या तो कुछ जा रहा है अंदर या कुछ निकल रहा है अंदर। तो अजान कह रहे हैं इसी तरीके से सुत में भी आता, सती पठान में भी ये वाली बात आती है कि वो माइंड, वो सतीवान है टॉयलेट जाते समय, नहाते समय, वगैरह वगैरह। तो ये कह रहे हैं हमें कि हम कोशिश ये करें कि जो बहुत सामान्य चीजें लगती हैं हमें, जिसमें अमूमन मन, उस अंग्रेजी शब्द को हम फिर से यूज करते हैं, अमूमन मन जिसमें बोर हो जाता है, उसको भी, ऐसी गतिविधियों को भी, ऐसी परिस्थितियों में भी ये संभावना संभावना है कि हम धर्म और प्रज्ञा ढूंढ सकें, या ऐसी परिस्थितियों में भी हम मन को वीर्यवान, एनर्जाइज्ड रख सकें, बशर्ते हम उसको सिर्फ सतह पे देख के इधर उधर रफा दफा ना कर दें, बल्कि गंभीरता से उसके अंदर जाएं, या उस स्थिति में हमारे लिए सीखने योग्य क्या है इस पे चिंतन करें। उदाहरण के तौर पे ये जो सारी जो अजन लियम ने आज सुबह बात की, तो अजान घूम फिर के उस बात पे हमें वापस लेके आ रहे हैं कि सामान्य जीवन की गतिविधियों में, परिस्थितियों में भी गंभीरता और प्रज्ञा ढूंढी जा सकती है, बशर्ते कि हम उसको सही नजरिए से, सही दृष्टिकोण से, सही ध्यान से देखें। So we have the duty to make the ordinary things very special through the power of our application of the mind. And at the same time, the very special things where we get overly excited or feel overwhelmed by, make them very ordinary through going into a mode of peace and then a mode of seeing them just as something very special, nothing special in that. For example, if we have a very special opportunity, not to get carried away with it and not to get overly zealous and ambitious about having more of that, but then downplaying it and going back inside and being able to see it as something very normal. तो अब इसका जो विपरीत है वो अजान बता रहे हैं। एक तो ये है कि सामान्य में हम कुछ विशेष ढूंढें, एक ये भी है कि जो चीज़ हमें विशेष लगती है, कोई बहुत बड़ी चीज, रोचक चीज हुई, कोई बहुत एक्साइटिंग चीज हुई, उसमें हम जो सामान्य है उसको भी देख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वभाव है, कभी चीजें उठती हैं और वो निकल जाती हैं। तो वो अब हमें उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं संक्षिप्त में, कि जो चीज़ें मन को बहुत रोचक लगती हैं, एक्साइटिंग लगती हैं, उसको भी, उसमें भी हम मन को स्थिर, सुकून वाला, शांतिपूर्वक, सामान्य रख सकते हैं। और इसी तरीके से वो चीज़ें, वो घटनाएं, वो परिस्थितियां जो बिल्कुल हमें बोरिंग लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं, उसमें हम गंभीर धर्म ढूंढ सकते हैं। मूल रूप से ये आज अजान हमें बता रहे हैं। So I was contemplating while we were doing the chanting in various situations today, whether it's actually boring for you or whether it's exciting or whether it is overly exciting and promising somehow too much, and but it's actually just words. So there's a whole spectrum in when we do our rituals or when we do our regular practices, where we can actually reflect on. We can see that in one way we are chanting the words in various languages. There's Pali, Pali with an Indian accent, Pali with a German accent, Pali with a Thai accent, various parts of Pali, and then there's Hindi, Hindi with an Israeli accent, Hindi with a Northern Indian accent, and so forth. And then there's like the English translations that we sometimes do, sometimes also with German accent. It doesn't matter, but it's English. And then we have the Thai translation, which our group from Ubon is very used to. So I was wondering, what does it actually mean to all of us when we're sitting either here in the Shala or whether we're over at the old monastery and we're doing chanting? Then going to Chaneti Stupa, the same thing. Actually, some of you may have noticed we chanted almost exactly the same chants. A slight variation, it was maybe 80% the same.
So I was wondering, are people getting bored of us chanting here? And what's the attitude? And the monk's supposed to chant. Do people think it becomes sacred through the mere act of chanting? Or is it sacred because the monks are chanting? Is it less sacred if the lay people are chanting along? And if they chant in the wrong rhythm or in the wrong accent, is it then wrong suddenly? So I had all these reflections on what is this happening actually. It really depends on how we feel while we're doing this and how much importance, how much depth we give to it. And I wanted to put in a good word for the so to say ritualistic chanting, because it is not sacred in itself. It becomes sacred because of our profundity while doing the chanting, while reflecting on the teachings. And it's also special because we have accumulated little bits and pieces of meaning, little bits and pieces of profundity over the times, over the many, many times that we've done this. It's like become richer and richer in one way. Yet sometimes we just chant like a parrot, not knowing what we're doing, and we miss the line and we're on page so and so while they actually are still on another page or so. So it really depends on how much importance we give to these things while we're doing them. Particularly the chanting, it's the Buddha Vachana, it's the words of the Buddha. Some of it are poems around the words of the Buddha, the introductory chants, for example, or the evening chanting this evening. But 80% is really the idioms, the words that the Lord Buddha used while he was walking around the Kuru country, for example, or maybe Magadha, or maybe Koshala, who knows? But like it's a collection of all the teachings comprised into something that we can easily remember, and that we can then apply day after day after day, maybe sometimes even twice a day, 3 times a day, maybe sometimes do the same chanting all the time. I don't know how many times I've chanted Itipiso. I believe, maybe, I don't know, I haven't really imagined, maybe hundreds and thousands, maybe, I don't know. But like it's still, if I'm in the right mindset, it becomes a very profound experience. तो जो थीम चल रहा है उसको अजान केवली अब एक और उदाहरण से हमें बता रहे हैं। पाठ जो हम करते हैं, जो हम चैंटिंग करते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई देखिए, हम जब पाठ करते हैं तो बहुत संभावना है कि हम उसको बिल्कुल मैकेनिकली करें, उसमें हम फंस जाएं कि भाई बस सामान्य रूप से, क्योंकि अब तो पाठ याद हो गया है, वो तो अपने आप चल रहा है, उसमें हम ध्यान नहीं देते तो भी वो चल रहा है। बजाय इसके कि हम अपने मन को गंभीरता से वो जो भाव है, जो शब्द हैं, उस पे लगाएं, ताकि जो हम उच्चारण कर रहे हैं हमारे मन में वही भाव जागे, या उस भाव से हम उच्चारण करें। तो संक्षिप्त में वो दोबारा से हमें एक्चुअली वही बात अलग अलग तरीकों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सामान्य है हमारे जीवन में, बहुत अमूमन परिस्थितियां चल रही हैं, सामान्य गतिविधियां हम कर रहे हैं, उसमें भी हम गंभीर धर्म प्रज्ञा को ढूंढ सकते हैं, भावित कर सकते हैं, पाठ जैसी, चैंटिंग जैसी सामान्य चीज में भी। So we sometimes get used to things and take them for granted, do them mechanically, automatically, and we miss out on being mindful and seeing the Dhamma in these things. So this can also happen in the way we relate to the material world. For example, all of us have enjoyed wonderful generosity of the people offering food, and some of you have participated in offering. Some of us are helping preparing it. The monks are going on alms round, receiving these offerings and receiving the food donations, and yet sometimes we get bored of the meal, even though it's so special. Similarly, if you live in a well-established monastery, sometimes you take the monastery for granted. For example, in Thailand, there's plenty of Buddhist monasteries and also plenty of forest monasteries. And there's plenty of bhikkhus around, so there's not the novelty or the specialty around it anymore. People sometimes get bored of the setting of the Buddhist scene, and so right now we're in a different situation because this is all new. We have this
brand new monastery, not even a year old, and it's already running very well. And we have a lot of support, and we have a lot of people that see the meaning of having such a monastery. So let's not slip and let this run automatic. Let's keep the meaningfulness in what we add to this monastery and add to the daily life here. Keep it alive and benefit for yourselves from it by seeing it, and whether you're cleaning the toilet, or whether you're planting a tree, whether you're sitting meditation, whether you're watering the flowers, or whether you're cooking, or whether you're driving the car to bring some monks or visitors here. Whatever we do, let's see it as a support of this very meaningful idea of having a monastery where we can practice the Dhamma, and not get into a routine where we just take things for granted, and not like also getting overly ambitious, thinking this is going to be now the new center of the Buddha Sasana. We're reviving Sasana in Haryana. Don't think like that. That's a bit too much, like too much on the excitement of on the positive side. But also let's not get too pessimistic and think, this is not going to work, and how are we going to do this? And let's not get too intimidated by possible dukkha that arises when we think about, say there's obstacles from the land, there's maybe obstacles from the organization, charity laws, and all kinds of things, and accounting and so forth. Let's not get too oppressed by that. Just do things with a sense of meaning and purpose, and put our hearts into it, and that we see whenever we add something, even if it's just a routine, that we keep it special and keep it meaningful, and remember the Dhamma behind it. And then I think we'll be quite well here in Sangharama, and have a very, very, very good future that lends itself to practice. And we can see the trivial things, and we see the special things. तो अपने देशना को अब वो अजान जैसे धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने हमें, खास करके जो संग्राम से जुड़े हुए ग्रुप हैं, लोग हैं, आप सब हैं, हम सब हैं, हमें उन्होंने 3 चेतावनियां दी हैं। और ये चेतावनी आप नोटिस करेंगे जो उन्होंने पहले प्रसंग बताए सूत्रों में से बिल्कुल उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। पहली चेतावनी है, वो कह रहे हैं कि भाई जब हम थाईलैंड जैसे एक बौद्ध सांस्कृतिक परिवेश में होते हैं तो हमारे लिए विहार, मोनेस्ट्रीज, भिक्षु, ये सब बड़ा सामान्य हो जाता है, इसमें कुछ हमें खास नहीं दिखता। तो बड़ा आसान है कि ऐसे एक हम जाल में फंस जाएं, ट्रैप में फंस जाएं, जैसे ठीक है चलो भी चल रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है ना। एक तो ये। दूसरा कि हम ऐसा भाव बनाए, अरे हम धर्म को बचाएंगे, धर्म को फैलाएंगे, इस प्रकार का जो भाव आता है, धर्म बचाना चाहिए या धर्म लुप्त हो गया हम उसको वापस ला रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया इस भाव से भी बच के रहो। ये भी एक तरीके का ट्रैप है। और तीसरा नकारात्मकता का, तो पता नहीं कैसे होगा, कितना मुश्किल है, ये सारे अकाउंटिंग वाले काम हैं, इतने सारे कायदे कानून हैं, सरकार के इतने सारे आजकल नियम बन गए हैं, उसके बीच में हम कैसे इसको कर पाएंगे, या पता नहीं हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जो वास्तव में विघ्न आ रहे हैं या आते हैं या आ सकते हैं, उनमें उनके वजह से मन में नकारात्मकता भी ना आए। तो बिल्कुल जो आज की देशना का जो थीम रहा है, उसी को अजान केवली हमारे लिए, जो खासकर की मोनेस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वो अब हमें ये संदेश दे रहे हैं कि इन 3 परिस्थितियों से खास, और ये सारी परिस्थितियां हमारे मन में उत्पन्न हुई। बाहर की जो स्थिति है जो है सो है, अब निर्भर ये करता है कि हम मन को या मैं मन को किस तरफ ले जाता हूँ। इस प्रकार की एक सामान्य बोर्डम की तरफ ले जाता हूँ, बस चल रहा है, मैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजना, एक्साइटमेंट ढूंढ रहा हूँ कि पता नहीं कुछ ग्रेट कर रहे हैं,
मैं उसमें नकारात्मकता देख रहा हूँ, वो मेरे ऊपर। घूम फिर के अजान हमें वापस अपने खुद, हम अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं उस पर ले आए हैं, खास करके हम सब के लिए जो कि विहार से, मोनेस्ट्री से, आश्रम से जुड़े हुए हैं। So I think this is also very much in the spirit of Ajahn Chah, thinking that everything is practice. Everything we do, if we apply our mind properly and make sure that we don't get carried away with things, either good or bad, and also see the profundity of the normal things and add meaning to them all the time through our mindfulness, through our reflections, through our wisdom, through our connection with the Dhamma, then I think we'll very much prosper here. And I'm very happy and excited. I have to admit that I'm here again. I'm not sure how the resident monks feel. Maybe they're already bored of the monastery. For me, it's very special to come here, and I feel it's very rewarding, but I try not to get carried away with it and see it as it is. It's a project, and we have to keep making it work. तो अजान याद कराते हैं कि भाई अजान चाह का भी बिल्कुल यही तरीका था धर्म सिखाने का, धर्म पढ़ाने का, कि सामान्य जीवन में जो चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसमें हम उसको हम साधना समझें, उसको हम साधना माने, बल्कि सामान्य जीवन ही साधना है। कैसे साधना है? इसी तरीके से जैसे उन्होंने बताया कि जो जो चीज़ें हमें उत्तेजित करती हैं उसमें हम मन को काबू में करें, जो जो चीज़ें मन को बोर करती हैं उसमें हम कुछ विशेष ढूंढें, इस तरीके से। और वो अपने खुद की अब बात कर रहे हैं कि भाई वो तो यहाँ आते हैं तो बहुत उनको अच्छा लगता है, बहुत प्रमोदित होते हैं, कितना बढ़िया काम चल रहा है। वो कह रहे हैं लेकिन ये संभव है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो भिक्षु यहाँ रह रहे हैं और लोग जो रह रहे हैं, उनके लिए अभी ऑलरेडी बात पुरानी हो चुकी है, अरे इसमें क्या है, तो चलिए रहा है नॉर्मल। तो इस बात की वो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम जीवन में परिस्थितियां जो हैं उसमें बहने के बजाय उन परिस्थितियों में प्रज्ञा धर्म को ढूंढने की कोशिश करें, और परिस्थितियों के माध्यम से ही हम अपने मन में धर्म भावित करें। E1. सब साधुवाद कर सकते हैं पहले अजान को मेरे साथ। साधु साधु साधु। Shubharatri. Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Smakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Good night. तो हम कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। We meet again at 5:30 in the hall. And tomorrow's schedule will be quite similar to today. After the morning session, you can have some breakfast and then Pindapat at around 8 o'clock.
And it's quite likely that by about 9, the larger group from Delhi that's staying in the hotel in Yamunanagar will also join us. And the morning program in the tent outside will start at 10. कल का जो प्रोग्राम कार्यक्रम है वो लगभग आज की तरह रहेगा. सुबह हम 5:30 मिलेंगे और फिर 7 बजे ब्रेकफास्ट होगा. 8 बजे हम पिंडपात के लिए जाएंगे. संभवतः जो दिल्ली से ग्रुप आ रहा है जो कि यमुनानगर में होटल में रुके हुए हैं वो लोग 9 बजे तक यहाँ आ जाएंगे. और 10 बजे से जो औपचारिक कार्यक्रम बाहर टेंट जो लगा हुआ है उसमें शुरू हो जाएगा 10 बजे से. जो जूम ऑडियंस है सुबह का सत्र चिराग वी हैव इट ऑन. we don't have the morning session in the morning. Okay. तो जूम ऑडियंस के लिए जो लाइव स्ट्रीम है वो सुबह 10 बजे से होगी. और क्योंकि कैमरा अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो टेंट में अब सेटअप करेंगे तो आपसे हम सुबह 10 बजे सीधे जो टेंट से प्रसारण होगा उसमें मिलेंगे. गुड नाइट. कल सुबह मिलेंगे.